एवरीवन, आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। आज डॉक्टर्स डे है और हमारे साथ दो ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जिन्होंने अपनी क्षमता से आगे आके देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। डॉक्टर उमेश सवारकर और डॉक्टर अश्विनी सवारकर सभी के लिए साहस का एक बेहतरीन उदाहरण है। अमरावती महाराष्ट्र में रहते हैं और डॉक्टर उमेश पेशे से एक आईवीएफ एक्सपर्ट और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर अश्विनी एक पैथोलॉजिस्ट है। डॉक्टर उमेश और डॉक्टर अश्विनी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो डॉक्टर उमेश, 2017 में एक दुर्घटना ने आपकी जिंदगी बिल्कुल पलट के रख दी। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली ऑन दैट डे? On that day, we have a doctor's annual function actually. Means yearly जो हमारा annual function होता है. It was the last day of that annual function. We were returning it from that function at around midnight, 12:30 p.m. And just in front of my gate, where I parked my car to open the gate, some car has come. It was almost uncontrolled car, very high speed, and then suddenly hit our car on standing position. That day, all of us were injured, but I was the less, and Ashwini and Meera was hit badly with that car. And in the same incident, she was badly injured with brain injury. We were admitted to the pediatric hospital. From there, incidents has started, and she was almost unconscious. Ashwini was also unconscious. And I was okay just with the minor injuries, so I was looking after them. And then Mira's condition was very severe, so we shifted her to Nagpur on the same night. And then Mira started. And on third or fourth day, I came to know she was admitted to a different hospital because her pelvic girdle and lower limb were fractured. So she was admitted in a orthopedic hospital, and Mira was at pediatric hospital, NICU actually. And on fourth day, I came to know that she has a brainstem injury, so almost a brain dead. So, how old was she at the when the accident happened? She was on 3 months, Three three and a months. half months. Mm. So, I read somewhere that ma'am, when you were admitted, and I mean, how did you react that time when you saw the result of that and the X-rays and MRI and all, and uh, your wife was in a different hospital? Um, Yeah, did you had to go and tell her over there that this is what has happened? actually, that time Ashwini was not knowing anything about the Mira. She was assuming that she is fine because of her fracture and she could not move. The baby was breastfeeding, so we have admitted her to NSU. The thing was, she was assuming same thing. Uh, and I know everything because मुझे इसको भी संभालना था और उधर भी संभालना था. उसको भी काफी इंजरीज थी तो वो मूव भी नहीं कर पाती. मतलब शी कैन नॉट इवन टर्न अप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ना वो थी. सो उसे ऐसा लग रहा था कि मीरा इज फाइन. उसी एनएसयू में एडमिट है बिकॉज शी कुड नॉट फीड. सो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब मोस्ट डिफिकल्ट थिंग वही था कि अश्विनी को वो चीज एक्सप्लेन करना कि कंडीशन इज नॉट गुड. और वो सब, मतलब जब मैंने एक्सप्लेन किया तो सब समझ गया कि क्या कंडीशन है. एंड doctor explained me that even if she survives, she will be vegetative. Means she will not be of any kind of. It will be a vegetative life. So क्या करना है, वेंटिलेटर का सपोर्ट निकालना है यार बहुत. तो मैं वहां से जब निकला और अश्विनी के हॉस्पिटल को मिलने गया तो वन थिंक कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी कंस्ट्रक्टिव या ऐसे नहीं जाना चाहिए. जाना भी है तो कुछ तो भी अच्छा होके जाना चाहिए. सो मैंने जब अश्विनी को एक्सप्लेन किया तो ऑन 5 मिनट और 6 मिनट, मतलब 5-10 मिनट में उसने बोला कि नहीं अपन कुछ तो भी करते हैं. सो मेरे दिमाग में जो थॉट था, सेम सेम थॉट इसके थे कि अपन इसका ऐसे नहीं जस्ट वेंटिलेटर निकाल के नहीं छोड़े, वी विल डू समथिंग. सो देन
that thing has struck me, and then we asked her for organ donation. सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि इतना छोटे इवन इन्फेंट्स का भी ऑर्गन डोनेशन का कोई प्रायोरिटीज नहीं था इवन इन इंडिया, कि उसको सर्टिफाई करने वाला कोई डॉक्टर नहीं थे, मतलब कोई अथॉरिटी नहीं थी कि हु विल सर्टिफाई द इन्फेंट और लेस देन इन 12 मंथ मे बी। सो उसके लिए हमको अप्लाई करना पड़ा, एंड इट वाज अ स्पेशल स्टेटस। इट टुक ऑलमोस्ट इवन गवर्नमेंट organ donation body has acted very fast, but still they have to take a special permission from, I think, from government मंत्रालय से उनको स्पेशल परमिशन निकालनी पड़ी, एंड दे हैव ग्रांटेड इट विद इन 36 आवर्स ओनली, कि हाँ उसके लिए कोई इंस्पेक्टर को, मतलब रूटीनली जो लोग ऑर्गन डोनेशन को सर्टिफाई करते हैं कि दिस पर्सन कैन डोनेट हर ऑर्गन और हिज ऑर्गन, दैट दे वर एडल्ट फॉर सर्टिफाइड फॉर एडल्ट पर्सन, नॉट फॉर इन्फेंट, बट विद इन 36 आवर्स, I think 48 hours. 48 hours में at night they have certified कि हमने authority को authorize किया है to certify your baby whether she can donate or not. And from there activities start. Then we search for donor. We inform the organ donation organization कि such an infant is there who can we can donate her organs. So they almost find 3 donors, one for heart, then kidney and liver. 3 donor were ready for that. उनको डोनर मिल गए थे, जो yes सॉरी रिसिपिएंट मिल गए थे। yes recipient were ready for 3 organs, and then again the green corridor was started to ready from दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से I think donor मिले थे शायद recipient from there वो ग्रीन कॉरिडोर करना था, फिर मॉर्निंग 4 o'clock का फ्लाइट निकलना था, but at that time only I got a call from hospital कि मीरा का अरेस्ट हुआ है, हार्ट अरेस्ट उसको हुआ है। सो इनिशियली जैसे सर ने बोला, मुझे मतलब आई एम नॉट अवेयर के उसको कुछ हुआ है, टिल लास्ट आई वाज होपिंग दैट शी इज ओके। सो जब लास्ट में मुझे सर ने पूछा कि तुझे मिलने जाना है क्या उससे, तू कभी पूछ नहीं रही कि कैसी है क्या है, देन आई गॉट टू नो कि कुछ तो मतलब ठीक नहीं है। नहीं तो ये सडनली नहीं पूछते थे कि तुझे मिलना है क्या क्या है। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, कुछ तो बहुत सीरियस है और जो कि रिवर्ट बैक नहीं होगा। उस टाइम में कुछ बड़े बड़े ख्याल नहीं है कि ऐसा करना है वैसा करना है, इतना था कि एनी हाउ बाय एनी मींस शी शुड बी अलाइव, किसी भी मायने में एटलीस्ट। ऑर्गन डोनेशन किया तो जितने भी रेसिपिएंट होंगे एटलीस्ट उनको तो भी लाइफ मिलेगी, तो बाय एनी अदर वे शी विल बी अलाइव। बस इतना ही थॉट था मेरे इसमें कि वो अलाइव मतलब किसी को अगर उसकी हेल्प से अगर किसी की जान बच सकती है या फिर किसी को बेनिफिट हो सकता है तो इट विल बी गुड। सो हम दोनों ने डिसाइड किया कि इफ पॉसिबल देन वी विल गो फॉर ऑर्गन डोनेशन। I think that's such a wonderful thing, and to think of it at that time, it's very difficult. But Dr. Umesh, उस 2 दिन में हमको जो एक पॉजिटिव एनर्जी मिली कि भाई, सो ऑलमोस्ट उसके जाने का दर काफी कम हुआ जब वी वर रेडी कि इसको 3 डोनर मिले और वी कैन डोनेट 3 ऑर्गन्स टू 3 पीपल। तो वो एक बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी। तो वो जो एक बोलते हैं ना दुख कम होना, वो पर जिस टाइम वो फोन आया मॉर्निंग 4 o'clock की शी हैज सकम, तो मुझे जितना दर्द उसके जाने का उतना ही दर्द ये हुआ कि हाँ जिस चीज के लिए अपन कर रहे थे वो भी नहीं हो पा, वो तो एक्सेप्ट हो चुका था कि अभी वो जाना है, पर वो ज्यादा बुरा लगा कि What were the आपके कौन सी रोड ब्लॉक्स थे उस टाइम की ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन करने में इतना टाइम हो गया, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू the whole organ donation and transplant ecosystem कि how can we improve things so that the next time in case something happens like this थोड़ा streamlined है पूरा प्रोसेस। सबसे बड़ा हर्डल यही था कि दैट टाइम ओनली एडल्ट डोनर के लिए ही सर्टिफाइड अथॉरिटी थी। आई थिंक फॉर लेस देन 3 or 4 years के नीचे के
डोनर्स के लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी who can certify all over Maharashtra. So that was the biggest hurdle, or not a single authority was there in India, I think, who can give a certification, who can authorize the organ donation for infant. Such a small infant. हाँ, so that was, I think, मेरा अगर वो organ donation हो पाता था तो मेरा was the youngest donor in India who would have donated her organs to anybody else. So that was the biggest hurdle, but definitely उनको भी पता नहीं था कि इतने छोटे donor का भी कुछ हो सकता है. That time authority was not also knowing. But once this problem has occurred, I think they have given certificates many authorities to certify these things, and I think they have we have written letters to PM also, and they have responded positively, and they have उन्होंने काफी normalize किया है to give donate organ from any institution. Right. That time institution or any hospital has to be certified or have to be licensed to donate the organ, and right now I think it is not needed. No, it is needed, but now the protocols for infants are more set, and there have been quite a few infants whose organs have been donated. So I think आपका जो case है, that kind of must have, forced everybody to think a little differently and set more guidelines in place. Yes. So that time Times of India I don't has think it was in vain. I think it was a very important thing that you did, which kind of made, the guidelines to get in place. It kind of, helped that. yes, that time even Times of India and many other newspaper and उन्होंने काफी positive feedback दिया, इस चीज को काफी ऊपर उठाया. So all government body has been wake up with that thing and they have act very fast. और उसके बाद काफी सारी authorities and ये open up way to legalize this thing, to channelize this thing. Sorry, not legalize. Correct. So I think that's a very positive thing that has come out of this. So you don't need to feel कि कुछ नहीं हुआ और हम कुछ नहीं कर पाए. आप बहुत कुछ कर पाए. So is there some message you would like to give to the public, to maybe others who might find themselves in this situation? What would be your message to everyone? सबको मैसेज मतलब ऐसा है कि अगर किसी पे ऐसी नौबत ना आए, लेकिन अगर इनकेस आती है तो थोड़ा सा रूटीन प्रोटोकॉल से बाहर आके थोड़ा सा अगर बाकी लोगों के बारे में सोचे तो बहुत लोग हैं जिनको रिक्वायर्ड है कि और उनको डोनर नहीं मिलते, जो कि मेन प्रॉब्लम है. अभी सभी चीजें तब से ज्यादा चैनलाइज हो गई है और हो सकता है तो सबने थोड़ा सा हटके सोच के अगर ऐसा किया तो बोथ वे जो रेसिपिएंट है उनको भी अच्छा मतलब उनका भी बेनिफिट होगा और हमको भी कहीं ना कहीं तो लगता है कि चलो किसी ना किसी तरीके से हमारे जो भी है लव्ड वन वो है यहाँ पे. तो सबने थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो भी इजीली है जैसे कॉर्नियल डोनेशन है जो कर सकते हैं, मतलब वो तो सभी लोग कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कुछ इसकी जरूरत नहीं है. या फिर बाकी भी जो चीजें हैं तो सोचना चाहिए लोगों ने कि ये भी एक ऑप्शन है कि हम जिस पे चल सकते हैं या फिर ये जो वजह से लोगों को बेनिफिट हो सकता है हमारी. मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने करीब वाले आदमी के जाने का दुख उससे काफी कम होता है जब आप उसके जाने के बाद भी उसके रहने का एहसास फील कर पाते. दिस वाज माय ओन फीलिंग कि मैं उस टाइम मुझे काफी कम एक पॉजिटिव एनर्जी मिली उस नोवेल कॉज से, और इससे ज्यादा पुण्य की बात कोई नहीं हो सकती अगर आप जाने के बाद भी किसी के लिए हेल्प कर सकते. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. आप अगर पुण्य पाप अगर मानते हो तो उसमें ये सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है. डेफिनेटली. Thank you so much. आपने, I'm sorry to make you relive that situation, but I think it's important that people know that you have done such a wonderful thing, despite such a huge tragedy. And to think like that at that point of time,
as doctors, you already knew, that patients are suffering, and you went out of your way to give life to so many people. And I thank you very much for that. Thank you. Thank you so much Thank for you. joining us, and all the best to both of you. Thank you. Thanks. Thank you.